soli. Hello. Greetings, brother. How are you? Good, you? I'm fine by the grace of God. Amen, amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ठीक है पीछे मस्ती के चलते रहे आगे ही आगे बढ़ते रहे यीशु के होके डर क्यों रहे चलते चले बढ़ते चले ये गाते हुए सारे जमाना हो रहा है रंजो नमकीन परवा के दुश्मन जमाना बुलाता रहे रंजो नमकीन परवा के जो है हमारा बढ़ते चले ये गाते हुए पीछे बसी चलते रहे आगे ही आगे बढ़ते रहे यीशु के होके Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. बढ़ते चले ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे आगे ही आगे बढ़ते रहे यीशु के होते डर क्यों रहे बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Hallelujah. 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 Your camera is upside down. Yeah. Yeah, you have to turn the other way because I see the people on upside down. No, the other way. The other way. Yeah, like that. Yes. Okay. Now I meet with our team, our worshipper, Brother Sabir. God bless you. Hello, hallelujah. Hallelujah. And my brother Adil. Hello, hi, greetings. Hello, how are you? Good. I'm also fine by the grace of God, and you? Everything good. God bless you. Oh yes, thank you. All of you too. The same thing. Amen. And meet with our church. Hello. Turn your camera upside down. Yeah. How are you? I say you need to turn your camera because I see always keep like this. Yeah. Yeah. Sorry, brother. Sorry. It's okay. No problem. Okay, brother. Let's start our today's meeting with the first prayer. So, would you like to pray? you want me to pray? Yeah, brother. Yeah, no problem. Okay, I'm going to pray. Hold on. Okay, Heavenly Father, Lord, Lord and Savior. Lord, Father, I'm coming to your presence in the name of your Son, Jesus. Lord Jesus, I want to say thank you for this meeting because this is because of you. It's not because of me. It's all because of you, Jesus. Lord, take this platform, take the stage. Use me, Lord, to preach the word of God. Lord, touch each single heart right here to receive your word, to receive a touch from you, your love, your presence, for them to understand who you are, Lord Jesus. And Father, I want to say thank you in advance for this day, and all the glory and all the credits goes to you. In Jesus' name we pray, by the power of the Holy Spirit, and everyone says, Amen. Amen. Okay. Yes, brother. Yeah. Let's start our. I'm going to share testimony too. First of all, I want that sing a Hallelujah chorus for the presence of the Holy Spirit and the God. Yeah, no problem. Lord Jesus Christ. So, okay, everyone raise your hand. I saw. hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour pour ces personnes qui sont venues à toi Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu touches leur cœur en ce moment et que ce monde va donner ta vie à toi complètement, sincèrement, le plus profond de leur cœur et qu'ils ne le font pas pour personne d'autre. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ qu'ils vont donner ta vie complètement à toi, qu'ils vont comprendre qui tu es, que tu es le Dieu l'éternel, le seul chemin, la vie, la vérité, que personne ne vient que par toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette magnifique journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, brother, let's start our today's meeting. No problem. So I'm going to share my testimony, where I come from. Yeah, मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ. I was a former Catholic believer for 34 years. मैं एक बार का बशिंदा हूँ जो एक कैथोलिक ईमानदार था 34 साल पहले. Since August 23, 2015, मैं 2015 में एक मुकद्दस अगस्त था. that's the day I gave my life to Jesus. आज मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है. And August 30, 2015, that's the day I get baptized, immersed. 15 अगस्त 2015 में मैंने बपतिस्मा लिया. Because maybe one of you follow a religion. क्योंकि आप में से बहुत सारे मजहब को फॉलो करते हैं. I'm going to tell you, all the religion around the world will not save you. मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर के तमाम मजहब जो हैं वो आपको नहीं बचा सकते. It's not a question of disrespect people. I'm against what they teach. ये एक सवाल नहीं, मैं इस के खिलाफ हूं. The religion, they will teach you you have to do good works to go to heaven. मजहब आपको सिखाता है कि आप अच्छे काम करें तो आपको जन्नत फिरदौस मिलेगी. The religion, they will teach you we're all children of God, be a good person, and you go to heaven. मजहब आपको सिखाता है कि आप एक अच्छे इंसान बने तो आप जन्नत में जाएंगे. That's not what the Bible teach. ये वो नहीं जो किताबें मुकद्दस सिखाती है. The Bible teach the only way to go to heaven, you must be born again. किताबें मुकद्दस सिखाती है कि अगर आप हेवन में जाना चाहते हैं तो आपको दोबारा जिंदा होना पड़ेगा. You have to be born water and spirit. आपको दोबारा जिंदा होना पड़ेगा पानी में, रूह में. The water is the word, and the spirit is God. जो पानी है वो दुनिया है और जो रूह है वो खुदा है. Because we're not born Christian. क्योंकि हम मसीही पैदा नहीं होते.
We're not born child of God. हम खुदा के बंदे पैदा नहीं होते. We have to become a Christian and a child of God. हम खुदा में क्रिश्चियन हैं. In the book of John, chapter 1, verse 12, it says, if you believe and accept him, you become the right to become children of God. In John, chapter 1, verse 12. यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत ये कहती है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं. The religion, they will set rules. Jesus will set you free and free indeed. मजहब हमें सिखाता है कि यीशु हमें गुनाहों से आजाद करता है. Because when I was a Catholic for 34 years, जब मैं एक कैथोलिक बिलीवर था 34 साल पहले, I didn't know who Jesus who really was. मैं नहीं जानता था कि यीशु कौन है, वो कौन है. I know Jesus by following the tradition about Christmas, funerals, all these things like that, weddings. मैं यीशु को जानता था सिर्फ क्रिसमस और दूसरी जो रवाइयाँ थी उसकी बना पर. I know about Jesus, but I didn't know who Jesus who really was. मैं यीशु को जानता था मगर मुझे यीशु के बारे में वाज़ेह तौर पर नहीं पता था. When I was a Catholic for 34 years, they never teach me the Bible. They teach me the doctrine of men. जब मैं 34 साल पहले एक कैथोलिक था तो मुझे बाइबल नहीं सिखाई गई बल्कि एक शख्स की बनाई हुई किताब सिखाई गई. I was so convinced that I was following the real Jesus because I put my faith in men. उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं मसीह को जानूं. My attitude, it was, I was born Catholic, I will die Catholic, and no one will change my mind. This was my attitude. मेरा रवैया ये था कि मैं कैथोलिक पैदा हुआ हूँ और कैथोलिक ही मरूंगा, ये मेरा रवैया था. And then God opened my eyes in 2015 by using someone who preached the gospel to me, and I make my choice to follow Jesus. 2015 में एक आदमी ने मुझे सिखाया और उसकी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हुई. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. In John 14, verse 6. बाइबल हमें बताती है यूहन्ना की किताब में कि कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता मसीह की कुदरत को, मोहब्बत को पाने से. There's only one way, it's only Jesus. सिर्फ एक ही रास्ता है जो यीशु है. The Catholic will not save you. कैथोलिक आपको बचा नहीं सकते. The Jehovah Witness will not save you. यहोवा के चुने हुए आपको बचा नहीं सकते. The Mormons will not save you. आपको और कोई बचा नहीं सकता. The Islam will not save you. इस्लाम आपको बचा नहीं सकता. Judaism, Orthodox will not save you. यहूदियत, ऑर्थोडॉक्स आपको बचा नहीं सकते. Buddhism, Hinduism will not save you. बुद्धिज्म, हिंदुइज्म आपको बचा नहीं सकते. In the Bible, in the book of Acts, chapter 4, verse 12, it says, there's no other name who you can be saved. ईमान की किताब में बताया गया है कि कोई दूसरा नाम नहीं जो आपको बचा सके. There's only one door, only one way, and that is through Jesus Christ. सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपको बचा सकता है, वो यीशु मसीह है. Because 2,000 years ago,
क्योंकि 2000 साल पहले Jesus became full man and full God. यीशु एक पूरा आदमी और पूरा खुदा बनकर जमीन पर आया Because the Bible says the word became flesh. क्योंकि खुदा की किताब कहती है कि मेरे लफ्ज तब्दील नहीं हो सकते And even 1 Timothy 3:16, he became in a human flesh. Jesus. तीसरी वर्ष में वो कहता है कि मैं खुदावन हूँ Because when I was in the religion, क्योंकि जब मैं मजहब में था I did my will, not God's will. मैंने अपनी मर्जी पूरी की ना कि खुदा की And that's why since then my life is completely changed when I give my life to Jesus. और इस तरह मेरी जिंदगी पूरी चेंज हो गई जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी Because you can go to church 24/7. क्योंकि आप चर्च जा सकते हैं You can 24 pr- घंटे और you, दिन you can pray 24/7. आप दुआ कर सकते हैं 24 घंटे You can read the Bible and know the Bible. आप बाइबल पढ़ सकते हैं You can do all this. आप ये सब कर सकते हैं It's a good thing. It's a good thing. चीजों से But it doesn't make you a child of God. It doesn't make you a Christian. मगर ये सब चीजें आपको मसीही नहीं बनाती Because even the Bible says even Satan knows the Bible and he believes in Jesus, but it doesn't go to heaven. And that is the book of James, chapter 2, verses 19. बाइबल में भी ये लिखा है कि शैतान भी बाइबल को जानता है मगर वो जन्नत में नहीं जाएगा And today, you're all here to seek Jesus, not me. आज आप यहाँ हैं कि आप यीशु को पाएं और मैं भी I'm not a prophet. I'm not a pastor. I'm just a disciple of Christ. That's it. मैं एक नबी नहीं मैं एक पास्टर नहीं सिर्फ मैं खुदा का बंदा हूँ खुदा का बाशिंदा हूँ I'm here because I care about you, all of you. मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं आप सबका ख्याल रखता हूँ It's your soul. और ये सब I love you, but Jesus loves you more than I do. मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन यीशु आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है Today, it's a special day for you today. आज आपके लिए बहुत ही खास दिन है Because today is the day of salvation. क्योंकि आज नजात का दिन है And to receive the salvation, एंड यीशु के साथ नजात it's based on your own choice, on your own decision. आपके अपने नतीजे पर है कि आप क्या चुनते हैं In this, it's in the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 11 to 20. You can read it, brother. या In the Old Testament, Deuteronomy chapter 30, verses 11 to 20. You can read it to them. Take your time. chapter 13 and verse Verses 11 to 20. 11 to 20 Deuteronomy chapter 30, verses 11 to 20. That's the message of that. It's called choose life or death. It means choose heaven or hell. या तब सब इस्राएल सुनकर डर गए और तेरे दरमियान फिर ऐसी शरारत नहीं करेंगे और जो शहर खुदावन तेरे खुदा ने तुझको रहने को दिए हैं अगर उनमें से किसी के बारे में तू ये अफवाह सुने कि चंदा खबीस आदमी ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने शहर के लोगों को ये कहकर गुमराह
कर दिया है कि चलो हम उन मबूदों की जिनसे तुम वाकिफ नहीं पूजा करे, तो तुम दरियाफ्त और खूब तफ्तीश कतई यही बात निकल कर ऐसा मकरूह काम तेरे दरमियान किया गया, तो तू उस शहर के बशिंदों को तलवार से जरूर कत्ल कर डालना, और वहां का सब कुछ और छुपाए वगैरह तलवार ही से नीस्तो नबूद कर देना, और वहां की सारी लूट को चौं के बीच जमा करके उस शहर को और वहां की लूट को तिनका तिनका खुदावंद अपने खुदा के हजूर आग से जला देना, और वो हमेशा को एक ढेर सा पड़ा रहे और फिर कभी बनाया ना जाए, और उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ भी तेरे हाथ ना रहे, ताकि खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आए, और जैसा उसने तेरे बाप दादा से कसम खाई है उसके मुताबिक तुझ पर रहम करे और तरस खाए और तुझको बढ़ाए। तब भी होगा जब तू खुदावंद अपने खुदा की बात मानकर उसके हुक्मों पर जो आज मैं तुझको देता हूँ चले, और जो कुछ खुदावंद तेरे खुदा की नजर में ठीक है उसको करे। आमीन। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। That scripture means you have to make a choice to receive Jesus or to reject him. ये आज का कलाम हमें सिखाता है कि हम यीशु को कबूल करें या उसे ठुकरा दें, Because Jesus doesn't force you to have a relationship with him. He gives you free will. क्योंकि यीशु आपको इसके ऊपर फोर्स नहीं करता कि आप उसको जाने, उसने आपको खुली छूट दी हुई है। 2000 years ago, when Jesus came to earth, born to a virgin woman, Mary, 2000 पहले यीशु इस जमीन पर आया, he came to save the world, not to condemn the world, the Bible says. बाइबल हमें सिखाती है कि वो इस दुनिया को बचाने आया। He came to serve, not to be served. वो इस दुनिया में खिदमत करने आया, ना कि खिदमत करवाने। He did the will of his Father, not his will. उसने अपने बाप की मर्जी पूरी की, ना कि अपनी। He then came to create religion. He came to destroy the works of the enemy and to die for us on the cross for our sins. वो इस दुनिया में एक मजहब को बनाने नहीं बल्कि दुश्मनों के अल्फाज को खत्म करने आया था। Because the religion they will teach you we are saved by works. No, the Bible says Ephesians 2 verse 8-9 we're saved by grace through faith alone in Christ Jesus. क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हम ईमान से ही नहीं जिंदा रहेंगे। What's grace means? The word grace, it's a gift from God, it's free, but it's undeserving gift. बल्कि हम उसकी मेहरबानी से ही जिंदा रहेंगे, मेहरबानी किसकी? खुदा की। And that's why, like the Bible says in John 3:16, for God so loved the world, he gave his only begotten Son, whoever believes in him will not perish, have everlasting life. और यही वजह है कि बाइबल में यूहन्ना उसका 36 बाब में लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Jesus has a plan for you. In the book of Jeremiah, chapter 29, verses 11-14, he has a plan for hope and restoration. खुदा के पास आपके लिए एक मंसूबा है जो उसने अपनी किताब बाइबल में लिखा है, बताया है आपको। Jesus wants to live into your heart. It says in Ezekiel chapter 36, verse 26-27, it says, God is going to remove the heart of stone, is going to put his spirit in you, is going to give you a heart of flesh. खुदा अपनी किताब मुकद्दस में फरमाता है कि वो अपनी रूह आपको देना चाहता है। God is not interested in statue, image, building. He wants to live inside of your each single of heart of you. खुदा इसमें
इंटरेस्ट नहीं कि वो मूर्तियों और तस्वीरों और इमारतों में इंटरेस्ट करे, बल्कि वो आपसे मोहब्बत करता है जो आपके अंदर है. The real church, it's not the religion, it's not the building. असल चर्च एक ना मजहब है और ना ही वो इमारत है, वो आपका जिस्म है. The real church, it's to those who are born again. असल चर्च ये है जो दोबारा पैदा होते हैं. What church means? The church means it's the body. Like me, I'm the church, I'm the body, and Jesus is the head. चर्च वो नहीं जो इमारत है, चर्च वो है जो आपका जिस्म है. चर्च मैं हूँ जो मेरे, क्योंकि मैंने यीशु को कबूल किया है. It's not the building who makes the church. It's the body who makes the building a church. वो नहीं जो चर्च की इमारत बनाता है, बल्कि आपका जिस्म जो एक चर्च है. Like I am the temple, the Bible says. We are the temple. I am the temple because I give my life to Jesus. बाइबल हमें कहती है कि आपका जिस्म एक चर्च है, टेंपल. And that's why I'm here for you, because today you can receive the salvation, but it's your choice. आज आप उसकी निजात को पा सकते हैं, मगर ये आपकी चॉइस है. I want all of you to pay attention and fix on me, please. मैं चाहता हूं कि आप सब मुझ पर ध्यान दें और मेरी बात को सुने. I want you to pay attention and listen very carefully, because it's very important what I'm about to say right here. मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर ध्यान दें, क्योंकि आज मैं बहुत ही जरूरी चीज आपको बताने लगा हूं. If you want really if you want to receive Jesus as your Lord and Savior, अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु को कबूल करें अपना खुदा और अपना निजात दहिंदा के तौर पर, it's between you and Jesus alone. तो ये आप पर है और यीशु पर. I don't want it for you to give your life to Jesus because you see someone else doing it. मैं ये नहीं चाहता कि कोई आपके लिए ये करे, आप खुद ही यीशु को कबूल करें. I don't want you to give your life to Jesus because you see your friends, you see your mother, you see your uncle do it. It doesn't work like that. It's between you and Jesus alone, completely humble, completely surrender. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी माँ, आपका बाप, आपका कोई अंकल जो ये कर रहा है, बल्कि आप अपनी चॉइस पर इसे कबूल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप में और यीशु के दरमियान है. You can trick me, you can fool me, but you cannot trick God, you cannot fool God. आप मुझे पागल बना सकते हैं, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मगर आप खुदा से झूठ नहीं बोल सकते. Because God sees your heart right now, if you do it for Him, what a sincere heart, or because you give your life to Jesus because you see someone else doing it. अगर आप यीशु को चाहते हैं तो ईमानदारी से के साथ इसमें काम करें. When I gave my life to Jesus in 2015, I did on my own choice. Nobody forced me. I didn't do it because I see someone else doing it. I did my own choice to follow Jesus. जब मैंने 2015 में यीशु को कबूल किया, तो मैंने ये किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी चॉइस पर किया. It's very important what I'm saying here. ये बहुत अहम चीज है जो अब कहने लगा हूँ. Because I see a lot of people, they gave their life to Jesus, but our heart were not completely surrendered. They did it just to make other person happy. कि मैंने कई लोग देखे हैं जो यीशु को अब कबूल तो करते हैं, मगर उनके दिलों में बहुत से काम होते हैं. I hope I answer all your question. मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके तमाम सवालात का जवाब दिया होगा. If today
you want to give your life to Jesus, with a sincere heart, completely surrender and humble yourself, I want you to raise your hand. अगर आपने अपनी जिंदगियां यीशु को दे दी हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में और एक ईमानदार के तौर पर अपने हाथ खड़े करें. Okay. I don't want you to raise your hand because I tell you to do it. I want you to raise your hand because the word says if you want to give your life to Jesus, you have to do what your own choice. मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप अपने हाथ खड़े करें ताकि मैं देखूं, बल्कि बाइबल ये कहती है कि अगर आपने उसे कबूल किया तो आप Because I don't want you to raise your hand because I tell you so. If you want to give your life to Jesus, show me. इस पर नहीं कि अगर मैंने आपको कहा है कि अपने हाथ खड़े करें तो आप कर रहे हैं, बल्कि इस पर कि आपने अगर यीशु को कबूल किया है. If you want to give your life to Jesus, show me. Raise your hand or stand up. I'm glad and happy I'm going to pray for you. May I have to do it for him. अगर आपने यीशु को कबूल किया है तो अपने हाथ खड़े करें और खुद भी खड़े हो ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं. Do it for Jesus, not for me. सिर्फ यीशु के लिए करें, मेरे लिए नहीं. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. Merci Seigneur. So I'm gonna pray in English. My brother's gonna translate it to you in Urdu, and you're gonna repeat after him. मैं आपके लिए दुआ इंग्लिश में करूंगा और मैं आपका भाई इसे उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा. I want you to listen carefully. मैं चाहता हूं कि आप ये एक ईमानदार के तौर पर सुने. When I'm gonna do the prayer, जब मैं आपके लिए दुआ करूं, I want all of you to say out loud with your mouth, and the heart has to come with it. मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप इसे केयरफुली सुने. And when I'm going to do the prayer, I want all of you to close your eyes because I don't want you to be distracted. I want all of you to focus on Jesus. मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप अपनी आंखें बंद करें और किसी और चीज के बारे में ना सोचें, बल्कि यीशु के बारे में सोचें. I want completely silence. And all of you close your eyes, pay attention, and focus on Jesus. मैं चाहता हूं कि आप सब आंखें बंद करें और यीशु को अटेंशन दें. I'm going to say the prayer. My brother is going to translate to you in Urdu, and all of you have to repeat after him out loud. और मैं चाहता हूं कि जब मैं दुआ करूं तो मेरा भाई आपके लिए ट्रांसलेट करे और आप भी मेरे पीछे पीछे बोलें. Okay, brother, I'm going to pray, and you're going to translate to them, and then has to repeat after you, okay? Okay, brother, okay. Okay. Heavenly Father, who art in heaven. आसमानी बाप, I'm coming to your presence in the name of your Son, Jesus Christ. मैं इस में आता हूं यीशु मसीह के नाम में. I want to say thank you, Father. मैं चाहता हूं कि आप यीशु का शुक्र अदा करें. आप यीशु मसीह का शुक्र अदा करें. For what you're going to do for me today. उसके लिए जो उसने आपके लिए आज किया है. Hallelujah, Jesus. I confess with my mouth and I declare with my mouth. मैं इसको अपने मुंह से मानता हूँ. मैं इसको अपने मुंह से मानता हूँ. That 2,000 years ago. कि 2000 साल पहले. That Jesus came to earth. यीशु इस दुनिया पे आया. Born to a virgin woman, Mary. और पैदा हुआ एक औरत मरियम से.
that he did the will of his Father, जो उसने अपने बाप की मर्जी पूरी की, that he died on the cross for my sin, क्योंकि वो सलीब पर मरा मेरे गुनाहों के लिए। after 3 days he rose again, और 3 दिन के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ, that he is the Son of the living God, क्योंकि वो बेटा था एक जिंदा खुदा का, that Jesus is the way, the truth, and the life, क्योंकि यीशु राह, हक और जिंदगी है, that no one comes to the Father but through him, क्योंकि कोई बाप के पास नहीं जा सकता सिवाय यीशु के, क्योंकि कोई बाप के पास नहीं जा सकता सिवाय यीशु के, that Jesus is God and he is Lord, क्योंकि यीशु खुदा है और वो ही हमारा रब्बी है, that God raised him from the dead, क्योंकि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, and from this moment, dear Lord Jesus, और अब से आप यीशु को कबूल करते हैं, I repent for all my sin, मैं अपने तमाम गुनाहों से माफी मांगता हूँ, I repent, I confess, and I renounce all my sin to you, dear Lord Jesus. मैं तौबा करता हूँ अपने सारे दिल और जान से अपने गुनाह, Please forgive me. मेहरबानी करके मुझे माफ करें, मेहरबानी करके मुझे माफ करें, And from this moment, dear Lord Jesus, और अब से यीशु हमारा बाप है, I confess you. मैं तौबा करता हूँ, I accept you. मैं आपको कबूल करता हूँ, मैं आपको कबूल करता हूँ, I receive you मैं आपको रिसीव करता हूँ as my Lord and Savior. अपने खुदा और अपने निजात जिंदा के तौर पर। Come live into my heart. आए और मेरे दिल में बसे। Remove my heart of stone. और मेरे दिल से वो पत्थर को खत्म कर दे। और मेरे दिल से वो पत्थर को खत्म कर दे। Put a heart of flesh and put your spirit in me. मुझ में वो बरकत वाला दिल और अपनी रूह मुझ में डाले। Be the center of my heart. मेरे दिल के दरमियान में आए। Take control of my life and my flesh. और मेरी जिंदगी पर अपना कंट्रोल करें। I surrender my heart, my life completely to you, dear Lord Jesus. मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। मेरे जिस्म में आए यीशु। Dear Lord Jesus. मेहरबान खुदा। Baptize me by the baptism of the Holy Spirit. मुझे बपतिस्मा दे, रूह कुदस का बपतिस्मा दे। I receive you, Holy Spirit.
मैं आपकी रूह कुदस को कबूल करता हूँ Empty myself. और मेरे अंदर से तमाम गम को निकाल दें Fill me, Holy Spirit. मेरे अंदर में रूह कुदस भर दें मेरे अंदर रूह कुदस भर दें All of you. आप सब में Give me your strength and your grace मुझे ताकत और अपनी रहमत दे to understand your word and to do your will and not my will. ताकि मैं आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं ना कि अपनी को ताकि मैं अपनी मर्जी को पूरा कर सकूं ना कि अपनी को Give me your discernment, your wisdom, and your knowledge. मुझे आपकी अपना इल्म और अपना हिकमत दे Cover me with your precious blood from head to toe. मुझे सर से पांव तक भर दें Thank you, Father, for your Son. मैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए आपसे एक शुक्र अदा करता हूँ And from this moment, और मैं अब से I'm forgiven. मैं माफ किया गया हूँ I am saved. मैं बचाया गया हूँ I am a Christian. मैं एक मसीह हूँ I am a child of God. मैं यीशु का बंदा हूँ My name is written in the book of life. मेरा नाम जिंदगी की किताब में लिखा गया है I am born again. मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ I belong to you. You belong to me, dear Lord Jesus. ऐ बाप मैं आपसे ताल्लुक रखता हूँ और आप मुझसे I am your son and your daughter. मैं आपका बेटा और बेटी हूँ Thank you, Father, who art in heaven. ऐ बाप मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ जन्नत में In the name of your Son, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में By the power of the Hoली Spirit. रूह कुदस की ताकत से Amen. Hey! सारे ऐसे करो दोनों हाथों से Glory to Jesus. बैठ जाओ The Bible says there's a party in heaven for one person who repents. बाइबल में लिखा है कि अगर एक आदमी भी तौबा करे Now you're all my brother and my sister in Christ Jesus. आप सब अब मेरे भाई और बहन हैं मसीह में In the book of Philippians, chapter 3, verse 20, you're no longer citizen of Pakistan. You're a citizen of the kingdom of heaven. क्योंकि अब आप एक पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि आप जन्नत के शहरी हो गए हैं And from this moment, और इस लम्हे से the old of you is dead. आपके तमाम गलतियां खत्म हुई 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Now you're a new person in Christ Jesus now. ग्रंथियों की किताब में लिखा है कि अब आप मसीह में दोबारा जिंदा हो गए हैं Because now
The old of you is completely gone. Now you're a new person now. It's a new beginning today for all of you. क्योंकि अब आपकी पुरानी जिंदगी जाती रही और अब आप एक नए इंसान बन गए हैं. Don't ever forget this date today. Monday, April 29, 2024. That's the day. It's a new beginning. You give your life to Jesus. अब आप ये दिन ना भूलें क्योंकि आज सोमवार 29 तारीख और अप्रैल का महीना है. आप इस दिन को जरूर याद रखें. Imagine it's a huge party in heaven for one person who repents, but now all of you give your life to Jesus. Wow, glory to Jesus. आप ये तस्वीर करें कि आप एक 1% में आ गए हैं जिन्होंने तौबा की और आसमान पर पार्टी कर रहे हैं. Brother, how many people they give their life to Jesus? आप में से किन लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु को दी है? I just want to know how many people they give their life to Jesus. Just want to know the numbers of people who give their life to Jesus. Can you count them? Yeah. Brother, Take your time. the people who raise their hands are yeah. Okay. Then all of them give your life to Lord Jesus Christ. How many? There are 1, 2. Okay, let me count. Yeah. Almost 15. 15 people? Yeah. Yes, hallelujah. 10 to 15. Hallelujah. Clap for Jesus. It's a new beginning for all of you. I'm so happy. मैं आज आपके लिए बहुत खुश हूँ. Today, it's because of Jesus. It's not because of me. आज आप यीशु के जरिए दोबारा जिंदा हुए हैं, मेरे जरिए नहीं. Hallelujah. You're going to preach the gospel. You're going to preach the gospel to everywhere you go. अब आप दूसरों को बताएं कि मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ अपने आसपास के लोगों को. Ask God Hallelujah. to give you the strength, His grace, the boldness to preach the word of God everywhere you go. और खुदा से अपनी ताकत मांगे और दूसरों को बताएं. Don't be afraid. Don't be ashamed. और डरे नहीं और बल्कि खुदा से दुआ करें. Because God is with you all the time. क्योंकि खुदा आपके साथ है हर वक्त. Even if you go through hard times, fix your eyes on Jesus, not man. अगर आप मुश्किल वक्त में जाएं तो अपनी आंखें यीशु के ऊपर लगाएं. The solution is Jesus, not man. क्योंकि इसका हल यीशु है, ना कि कोई आदमी. Jehovah Jireh means God will provide for all your needs. Brother, can you repeat it again? Jehovah Jireh means God will provide for all your needs. यहोवा यरी का मतलब है कि यीशु कि खुदा आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है. Just put your faith on Him. The word faith means it's based on the things that you do not see. सिर्फ खुदा पर ईमान रखें और अपना ईमान उस पर रखें. Because the word says, when God is with us, who can be against us? क्योंकि खुदा का कलाम में बताता है कि इसके बाद क्या रहा. The gates of hell will not prevail against the church of Jesus Christ. आज का दिन यीशु के चर्चे गिरजाघर में है. Now the devil is under your feet right now. और
आज आज के वक्त आप खुदा के मुकद्दसों में शामिल हो गए हैं Because now Jesus lives inside of your heart right now. He's going to use you abundantly. आज यीशु आपके दिलों में रहने लगा है To do his work. कि ताकि वो अपना काम कर सके And that's why I give you some encouragement for all of you. और यही वजह है कि मैंने आज आपको ये हौसला दिया You're not going to change right away. It's a process. क्योंकि मैं इस तरीके को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक प्रोसेस है The only thing I'm going to suggest you, just focus on his word and on Jesus. मैं आपको ये तजवीज़ देता हूँ कि आप खुदा के कलाम पर और यीशु पर तवज्जो रखें That's it. That's all I got to say today. खुदा आप सबको बरकत दे आमीन Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Hall- Let's sing a worship song. Yes. Praise of God. Yes, for sure. Yeah. Yeah. बाबा तो शुक्र है मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम हर पाता रहे मेरे जीवन में Ça, on appelle ça de la louange en pakistanais, ourdou. मेरा उठना Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Wow. Wow, man. Les enfants qui chantent au Seigneur, c'est incroyable. Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, brother. Okay, we will leave. Yeah, no problem. Yeah. Okay. Have a good night, all of you. I love you so much, but Jesus loves me more than I do. आप सबका आज की रात खुशामद अच्छी गुजरे और आप यीशु को कबूल करें Amen. Amen. Thank you, brother. You have to say thank you to Jesus, not me. Thank you, brother, for giving me your precious time, brother. No problem, it's my pleasure. But all the glory, all the credit goes to Jesus, not me. Yeah, brother. All glory give to God. Yes, amen. Yeah. Indeed. So, okay, brother. Yeah. take care. Okay. Bye, brother. Bye-bye. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ah, wow. Comme vous voyez, mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, on est lundi 29 avril 2024. 15 personnes et plus qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Mais ça pourquoi j'ai allé vraiment approfondir un peu. J'ai allé vraiment dire, regarde, là, écoutez-moi bien, là. Soyez attentifs. Si tu veux donner ta vie à Jésus, là, il faut vraiment que tu donnes ta vie à Jésus, seulement toi et lui. Il ne faut pas que tu fasses pour, OK, je vais ma soeur le faire. Oh, ma mère, elle le fait aussi. OK, moi aussi, je vais le faire. OK, je vais me lever debout, je vais aller donner ma vie à Jésus. Ça, là, ça veut dire que tu ne fais pas avec tout ton cœur. Tu le fais parce que tu vois quelqu'un d'autre le faire. Il faut que ce soit vraiment à 100%, sincèrement, le plus profond de ton cœur. Tu te rends complètement à Jésus-Christ de tout ton cœur. C'est ça pourquoi je suis allé vraiment profondément avec eux. Vraiment, mais vraiment profondément avec eux pour dire, écoutez-moi bien, là, tu peux me truquer moi, mais pas Jésus-Christ. Là. Je veux vraiment que tu sois en toi et lui. Je veux que tu fermes tes yeux. Je veux que tu ne vas pas que tu sois distracté. Et tu te focuses sur Jésus et tu te rends ta vie à lui. Si tu veux donner ta vie à Jésus, ne le fais pas parce que tu m'as attendu dire lève ta main. Je dis oui, j'ai dit ça, mais pour dire que c'est la parole, il faut que tu fasses un choix. Mais là, je veux que tu me montres à moi. Si tu veux donner à tes jus, tu te lèves. Ils sont tous levés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment donné leur vie à Jésus parce que c'est venu de leur propre décision. Et je dis, ne le fais pas pour moi, ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, il faut que tu fasses pour Jésus-Christ. Si vraiment, sincèrement, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, fais-le pour Jésus-Christ. Ils ont tout répété après moi, mais ça qui se fait traduction en pakistanais, ça veut dire ourdou. Et tu voyais le monde qui a répété après lui. Et je voyais tu voyais que les enfants ont chanté vraiment à voix haute pour glorifier Jésus. Ah là là là! En chantant en leur langue. Tu sais, je ne comprenais pas, mais je savais qu'ils chantaient pour Dieu. Mais je voyais que les enfants chantaient. Tu voyais là, à voix haute. Tu voyais qu'il y avait une fin pour le Seigneur. Tu voyais qu'ils mettaient tout le paquet dedans pour le Seigneur. Et tout le crédit, la gloire va au Seigneur. Puis ça, c'est toute grâce à Jésus-Christ et non à moi. Hey! Wow, quel honneur, mais il me dit, ah monsieur, tu es un homme de Dieu. Je donne tout ça à Dieu. Moi je dis, regarde, moi je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je suis juste un messager, un disciple simplement. That's it, that's all, pas plus. Puis quand le monde donne des compliments, monsieur Bruno, merci, tu es un homme de Dieu, tu es un ci, tu es un ça. Je dis, regarde, moi, à chaque fois que je reçois des bons compliments, je donne tout de suite au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à lui et rien à moi. Fait que 15 personnes et plus ont donné la vie à Jésus-Christ. Wow! Que toute la gloire va au Seigneur. Tu vois, quand la Bible dit qu'il y a au moins une grande fête au paradis pour une personne qui se repent. Hein? Écoutez-moi, juste quand tu lis ce verset-là, focus sur ce verset. Il dit, il y a une grosse party, une grande fête pour une personne qui se repent. Pour moi, hein, ça doit être le contraire. On doit faire une grande fête quand il y a 20 personnes, 100 personnes qui donnent la vie à Jésus-Christ. Non, pour une personne. Pourquoi une grosse fête pour une personne qui se repent? Si juste à lire ça, la Bible te donne la réponse. Parce que ça n'arrive pas souvent. Juste ça, là, ça veut déjà dire que c'est pas tout le monde qui va au paradis. Parce que ça n'arrive pas souvent. Pour les autres, c'est énorme. Oh, wow. Là, 15 personnes et plus. Et c'est ça pourquoi j'étais allé vraiment attentivement avec eux. Écoutez-moi bien, là. Si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est ça. J'étais allé vraiment profond pour expliquer, pour clarifier à eux, regarde. Si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est toi et lui tout seul, là. Il faut que ça vienne de ton cœur profondément. Il ne faut pas que ça vienne, parce que je vois quelqu'un d'autre le faire, parce que j'ai entendu M. Bruno, il me dit levez la main, je lève la main. Non. Moi, je dis lève la main parce que je vois si tu veux donner ta vie à Jésus, parce que c'est la parole qui dit il faut que tu fasses un choix. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Parce que, je vais attendre que je vais être à la retraite. Mais là, je me focus plus sur mon mariage, je focus plus sur mes affaires. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un demain? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas d'autre dimanche? Qu'est-ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'autre demain? Il y a du monde qui meurt jeune aujourd'hui. La vie, c'est une vapeur dans le livre de Jacques. Je pense dans chapitre 4, verset 14. On peut partir n'importe quel moment. L'élèvement de l'Église, il peut se produire n'importe quel moment. Jésus peut arriver n'importe quel moment. Il faut être prête comme les 5 vierges.
La vie, c'est une vapeur. Arrêtez d'attendre. Parce qu'il y a un mot québécois qu'on dit plus tard, ce sera trop tard. Il n'y a pas de repos en paix. Ah, il ne souffre plus. Ah, non, il souffrait tellement là, sur terre, mais là, il ne souffre plus avec le Seigneur. Non. La Bible dit dans Hébreu, on meurt une fois après ce jugement. Il n'y a pas de repos en paix. Quand Jésus a vu le voleur sur la croix, il n'a pas dit que le voleur il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Jésus a dit, à partir d'avec moi, tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas dit, écoute-moi bien, là, tu vas être avec moi au paradis, mais pour le moment, tu vas reposer en paix dans ta tombe pour un bout de temps. Quand je vais t'appeler, je t'appelle. Non, c'est pas comme ça. Parce que l'enfer, c'est rien. Si tu prends toutes les souffrances que tu as eues sur cette terre, écoute-moi bien, là. Toutes les souffrances, que ça peut être les cancers, diabète, moi je parle vraiment les souffrances extrémistes. Si tu prends toutes les souffrances de tout le monde, c'est rien comparé à l'enfer. Les souffrances qu'on est en train de subir ici, là, les souffrances qu'on est en train de subir ici, c'est comme chatouiller comparé à l'enfer. L'enfer, comparé à toutes les souffrances que tu es en train de subir sur terre, que ce soit les maladies, les souffrances, je parle de toutes, là, toutes les souffrances, les maladies, les douleurs. Comparé à l'enfer, là, c'est comme chatouiller. C'est rien comparé à l'enfer. Parce que l'enfer, c'est quelque chose vraiment atroce pour l'éternité. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs et d'églises qui annoncent sur ça. On annonce seulement l'amour, 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 Jésus. Toujours Jean 3,16. Mais on n'annonce pas le 17, on n'annonce pas le 18, on n'annonce pas le 19. On annonce plutôt Jésus, le bon berger, sur l'âne. Mais est-ce que vous connaissez Jésus sur le cheval blanc? Est-ce que vous connaissez Jésus dans la Révélation? Parce que Jésus du Vieux Testament et Jésus du Nouveau Testament, c'est le même Jésus, le même Dieu. Un seul. Jésus qui va détruire le monde. Hein? Mais je me semblait que Jésus était amour. Oui, Jésus était amour. Jésus va faire ça. Oui, Jésus va faire ça. Et c'est normal que tu te sens irrité. C'est normal que tu te sens, tu juges, tu condamnes, tu ne montres pas l'amour, c'est pas comme ça que tu évangélises, tu pousses les âmes. Non, je m'excuse, non. Parce que Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis. Vous comprenez? Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis. On n'est pas avec Jésus-Christ. Oui, Jésus, c'est Dieu d'amour, c'est quand même un juge. Parce qu'aujourd'hui, on n'annonce pas la repentance. On n'annonce pas sur l'enfer. On n'annonce pas Jésus sur le cheval blanc qui va juger le monde. On n'expose pas le péché. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas populaire dans les églises. Aujourd'hui, en guillemets, les chrétiens, puis les pasteurs, puis les églises qui n'annoncent pas. On annonce toujours un évangile facile. Universalism. Believism. Il y a beaucoup de monde qui a donné la vie à Jésus sans aucune mention de repentance. C'est ça pourquoi il n'y a aucune transformation. Aucune transformation dans leur vie. Aucune crainte de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été convaincus de péché. Aucun esprit de conviction en eux. Parce qu'ils ont mal reçu Jésus-Christ de la mauvaise façon. Ils ont juste dit, croire en Jésus-Christ, t'es sauvé. Baptême, t'es sauvé. Baptême qui sauve. Fait juste dire le mot Jésus, t'es sauvé. Ouais, puis la repentance, lui, confesser tes péchés, renoncer tes péchés. C'est bien beau que tu peux même confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Puis il va le répéter encore. Et si dans ton cœur, tu dis que Jésus n'est pas Dieu, tu descends en enfer parce que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Quand la Bible dit que Jésus, il dit qu'il est Dieu. Avant Abraham, je suis. Hein? Alpha. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas faire cette déclaration-là. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'on annonce la repentance, on annonce l'enfer, exposer les péchés, c'est même pas le monde qui va venir te critiquer. Le corps du Christ, il va venir te critiquer. Wow! Puis moi, je me pose des questions à ces chrétiens-là. Parce que je demande leurs pasteurs quel genre d'évangile qu'ils sont en train de prêcher, puis quel genre de Jésus qu'ils sont en train de suivre, avec un point de ting, point d'interrogation. Quand la Bible dit qu'il faut avertir, dans Ézéchiel chapitre 3, de 18 à 21, sinon leur sang se sort sur tes mains. Avertir le monde, c'est quoi? Avertir les terribles conséquences.
C'est pas juste dire Jésus est aimé le monde qui a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point la vie éternelle. Toujours répétitif. Le vrai amour, là, tu sais quoi? C'est d'annoncer, d'exposer les péchés, parler de la repentance, parler sur l'enfer, parler sur l'Antichrist, parler sur Jésus sur le cheval blanc. Qu'est-ce qu'il va faire quand Jésus va retourner avec son Église? Jésus va faire ci, ça. Ça, c'est le vrai amour, c'est avertir. Arrêtez-moi ça, les chrétiens, toujours, là, Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16. Coupez la corde. Arrêtez-moi ça. Quand je dis arrêtez-moi ça, je n'ai pas dit d'arrêter de prêcher. Pas prêcher parce que c'est dans la Bible. Mais vous comprenez où est-ce que je m'en vais? Aujourd'hui, le monde, il n'y a pas de crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne savent même pas comment évangéliser. Ah, tu ne m'as pas l'amour. Tu n'agis pas comme Jésus. Et moi, je vais te répondre sur ta question. Généralement, quel genre de Jésus que tu es en train de suivre, toi? Le vrai mot, c'est d'avertir le monde des terribles conséquences. C'est pas dans la haine, c'est pas condamné. C'est pour l'amour. Oui, il y a une façon de le dire, il y a une façon d'approcher la personne. Ça, c'est absolument raison. Mais il faut avertir. C'est ça le vrai amour. Avertir le monde des terribles conséquences. Il y a beaucoup de monde qui ont reçu Jésus-Christ, un évangile facile, aucune mention de repentance, ils n'ont pas exposé c'est quoi les péchés, ils n'ont pas exposé c'est qui Jésus sur le cheval blanc, ils n'ont pas dit c'est quoi l'Antichrist, c'est quoi l'enfer. Ça, on annonce le moins possible. Seulement Jésus, il est mort pour toi, pour tes péchés, sur la croix, il est mort, tatati, tatati, tatata. On annonce, dans la vie qu'on est rendu aujourd'hui, on annonce plus. Je vais dire 98%, on annonce plus Jésus sur l'âne, puis peut-être 2 ou peut-être 1% Jésus sur le cheval blanc. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. On annonce plus Jésus sur l'âne qui est venu sur terre. On annonce plus sur Jésus-là. On prêche plus sur Jésus-là. Plutôt prêcher Jésus sur le cheval blanc que Jésus va détruire le monde avec le feu. C'est marqué dans la Bible. Lisez votre Bible. C'est pas moi qui le dis. Le Jésus sur le cheval blanc, est-ce qu'on prêche-tu sur ça dans les églises ou à l'extérieur? Non, pourquoi? Ah, parce qu'ils sont prêche Jésus, si on prêche la parole, le monde ne viendra plus à l'église. Ils vont s'offenser. Il va se offenser. Excuse-moi, je vais te dire la vérité. OK? Si la parole de Dieu, ça ne vous offense pas, c'est pas un évangile du tout. Jette ça à la poubelle, au plus vite. La Bible dit dans Hébreux 4,12, la parole de Dieu, c'est plus que double tranchant, ça pénètre. C'est comme un miroir, parce que ça parle de toi, ça nous expose. Puis t'aimes pas ça. L'évangile, si ça ne nous offense pas, c'est pas un évangile du tout. Je vous encourage maintenant, là je m'adresse aux chrétiens et chrétiennes à ce moment, je ne m'adresse pas au monde. Je m'adresse à vous. Prêchez l'évangile. Avertis le monde. Parce que là maintenant, le temps coule. On n'a plus le temps de faire Allez Jésus, tellement aimé le monde qui a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle. C'est plus le temps de jouer au domino. Il faut avertir. Il faut parler de la repentance. Il faut parler sur être né de nouveau. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai pas dit que c'est mauvais de faire des bibles-études. J'ai pas dit que c'est mauvais de lire la Bible. J'ai pas dit que c'est mauvais de prier à l'église. J'ai pas dit que c'est mauvais de faire un Bible College. La première chose que moi, quand je prêche l'Évangile, là, première chose que je fais, la première étape, là, toujours parler de la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que c'est bien beau que tu as des diplômes. Hey, j'ai un diplôme, je suis allé au Bible College, je connais toute la Bible, j'ai pris 24 heures sur 24, j'allais à l'église. Mais si tu n'étais pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu descends en enfer. Fait que tu as fait ça tout pour rien. Première chose, soit ce que ton âme est sauvée, soit ce que tu as reçu Jésus-Christ comme du monde. Après ça, tu peux lire la Bible, tu vois des Bibles-études. Au moins, ton âme est sauvée. C'est ça la première chose, la première étoile que moi, je vais encourager à toute l'Église de Jésus-Christ. Parler de la nouvelle naissance en premier. Après, c'est les Bibles-études. Après, lire la Bible. Après ça, après ci, après ça. C'est ça la première étape, parce que même si une personne va à l'école,
Bible étude, puis il lit la Bible, il veut apprendre c'est quoi Bible College, comme on dit en anglais. Mais pendant tout ce temps-là, là, tu ne sais pas si Jésus va revenir. C'est le moment que Jésus revient, là, pendant que toi, tu pries 24 heures sur 24, tu vas à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau, puis Jésus revient. Oublie ça, au ciel, tu ne rentres pas. Ça donne quoi faire tout ça? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais sois sûr que ton âme est sauvée, sois sûr que tu es né de nouveau. Je m'encourage, mes frères et mes sœurs, parlez de la nouvelle naissance en tout temps. C'est ça que moi je fais avec les Pakistans, là. Vous voyez pas? Je prêche toujours la nouvelle naissance parce que je veux que les autres soient sauvés en premier. Après ça, tu peux faire des cours bibliques, lire la Bible, prier. Au moins, si Jésus revient, au moins leurs âmes sont sauvées. Alors quoi ça donne que tu connais toute la Bible, que tu lis toute la Bible, tu connais par cœur, t'es comme Albert Einstein, comme on dit, que tu vas à l'église. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu descends en enfer. Ça donne quoi que tu as fait tout ça? Tu as fait comme un trou dans l'eau. Comme une expression, là, dans les années, quand moi, je n'ai pas reçu Jésus-Christ, quand j'étais encore catholique, on avait une expression, là, que tout le monde dit, tu es allé à Rome savoir le pape. Une expression, là, tu sais. Mais vous comprenez où est-ce que je vais en venir? Il faut parler de la repentance. Il faut exposer les péchés. Je m'en fous qui c'est, ça peut être ton collègue, ça peut être ton cousin, ta cousine. Ouais, mais je ne veux pas les offenser. Je m'en fous. Il faut que tu parles. Parce que si tu parles pas, après tu as un compte à régler avec Dieu. Ouais, pourquoi tu n'as pas parlé? Ouais, mais Jésus, tu sais, c'est mon oncle, ma tante, je ne veux pas les offenser. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré de les faire plaisir ou tu as préféré... qu'est-ce que Dieu va te dire. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as préféré plus obéir à tes parents, obéir à ma parole. Tu sais que s'il arrive quelque chose, leur sang, ce sera sur tes mains. C'est fait qu'il faut avertir. Oui, je comprends, je vais toujours répéter. Il y a une manière d'approcher la personne, il y a une manière de le dire. Mais il faut parler plus Jésus sur le cheval blanc que Jésus sur l'âne. Parce qu'aujourd'hui, j'entends toujours Jean 3,16. À tous les fois. Tout le temps, Jean 3,16, Jean 3,16, Jean 3,16. Moi aussi, je le fais quand je prêche l'Évangile. C'est normal pour que le monde comprenne que Jésus est mort pour nous. Mais pourquoi on n'annonce pas le verset 17, 18, 19? Ah, mais ouais, mais tu sais, quand tu dis ça, c'est méchant, c'est pas beau, tu prêches de la haine. Ah oui, lis ta Bible comme il faut, s'il te plaît. OK? Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère demeure sur lui. Ah, ben non, t'as une minute, toi. T'as pas le Fils, la colère. La colère! Ça, non, j'ai jamais entendu ça, moi, dans les églises, moi. Même un gars qui prêche l'Évangile dehors, j'ai jamais entendu ça de la bouche, moi. La colère. Ouais, c'est pourquoi? Parce que ça, c'est des mots, c'est dans la Bible, mais on prêche pas, parce que c'est des mots vraiment pesants. Parce que je dis les chrétiens, ils pensent que, ah, mais c'est moi, je dis ça, je n'agis pas comme Jésus. Ah, mais je n'agis pas comme Jésus. En faisant ça, je vais pousser l'âme, je vais pousser les âmes, ils vont partir. Tu vas pousser les âmes, le monde il ne viendra pas au Seigneur. Tu n'agis pas comme Jésus, tu es condamné. Excuse-moi, là, c'est toi que tu agis comme ça, peut-être tu as ces pensées-là, fait que le diable est en train de jouer avec toi. Dis pas non et c'est oui. Parce que c'est ça aujourd'hui. Le diable va faire n'importe quoi pour te... Non, prêche pas ça. Prêche pas sur l'enfer. Prêche pas sur la repentance. Fais juste donner de l'amour. C'est vrai, si tu prêches comme ça, c'est vrai, t'agis pas comme Jésus. C'est vrai, t'agis pas comme Jésus. Tu vas pousser le monde à partir. Il va pas venir au Seigneur. C'est ça, tu vas les condamner. Ça, c'est exactement quand Satan a dit à Ève. Ah, est-ce que vraiment Jésus a dit ça? Si tu manges ça, tu vas mourir? Non, tu vas devenir comme lui. Hein, tu vois? Et voilà. C'est comme ça, Satan procède. Prêchez l'Évangile. L'Évangile, c'est pas juste l'amour. Il faut parler même faut prêcher même la révélation aussi. Que le monde ne connaît pas c'est qui Jésus sur le cheval blanc. Le monde ne connaît pas c'est quoi la repentance. Le monde ne sait pas c'est quoi l'exposer les péchés, l'Antichrist. Jésus sur le cheval blanc. Est-ce que le monde connaît aujourd'hui c'est qui Jésus sur le cheval blanc? Avec des yeux, avec des flammes, avec une épée, avec le cheval blanc qui va juger le monde. Le monde ne connaît pas ça. Le monde connaît plus Jésus sur l'âne. Arrêtez-moi ça. Il faut prêcher la repentance. Il faut prêcher Jésus sur le cheval blanc. La révélation. Les terribles conséquences qu'il y a à venir. Mes frères et mes sœurs, prêchez sur ça le plus souvent.
Arrêtez de toujours prêcher l'amour, 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 l'amour. Excuse-moi, quand tu prêches l'amour, tu prêches pas l'amour. La vraie amour, tu sais quoi? Quand tu prêches même, avertir le monde. Écoutez-moi bien. Jésus t'aime, mais si tu rejettes Jésus, il y a ça, les conséquences. Jésus va détruire le monde, il y a ça. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. Ça, c'est un péché aux yeux de Dieu. L'Antichrist, c'est lui. Et lui, sa job, c'est de détruire, tuer, voler. Pourquoi? Parce que ça. C'est ça, le vrai amour. Avertir, parce que tu prends soin, c'est parce que tu veux bien pour leur âme. Avertir un aveugle, là, sur la rue, qui se dirige vers un immense trou, là, c'est pas le condamner et c'est pas de l'insulter. C'est par amour d'avertir. Excuse-moi, monsieur, il y a un immense trou. C'est pas de la haine, c'est pas le condamner. C'est pour d'avertir. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je vois beaucoup de chrétiens. Oh, tu ne pas l'amour. Oh, tu condamnes. Oh, tu juges. Chez qui toi pour juger? C'est mon Dieu qui peut juger. Mais je me demande quel genre de Bible que tu lis. Parce que la Bible dit qu'on a le droit de juger. Fait que, tu sais, je vois beaucoup de couleurs. Puis j'avoue, je ne suis pas gêné de le dire. Oui, il faut que je regarde moi-même avant de regarder les autres. Je ne suis pas gêné de le dire. Mais je vois des affaires. Puis je pose des questions s'ils sont vraiment des chrétiens et des nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, on annonce toujours l'évangile facile. Moi, j'attends pas souvent la repentance. Est-ce que tu es né de nouveau? L'Antichrist, exposer les péchés. C'est quoi un péché aux yeux de Dieu? Est-ce que ça, c'est un péché aux yeux de Dieu? Oui. L'Antichrist, Jésus sur le cheval blanc. On en toujours, Jésus est mort sur ta croix, Jésus est mort sur ta croix, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. C'est bien beau, il faut le dire, oui, c'est sûr. Je ne dis pas que tu vas contre. Mais il faut avertir le monde des terribles conséquences. Qu'est-ce qui va arriver si le monde ne donne pas leur vie à Jésus-Christ? Ce ne sera pas repose en paix. Il y aura un jugement après la mort, devant le trône de Dieu. Puis on a tous les comptes à régler. Puis si tu es au ciel, parce que c'est Jésus qui est en toi, qui te fait rentrer au ciel. C'était pas Jésus-Christ, c'est un lac de feu qui va t'attendre, éternellement. Si c'est pas moi qui dis, qui va vous le dire? L'Église? Les chrétiens? La religion? Non. Ça dépend. Il y a des chrétiens qui vont le dire, puis des chrétiens qui ne le diront pas. Parce qu'ils pensent que les autres, c'est une offense, c'est de la haine, c'est condamné en faisant ça. Mais je demande quel genre de Jésus qu'ils sont en train de suivre, je demande quel genre d'évangile qu'ils sont en train d'écouter, puis je demande quel genre de Bible qu'ils sont en train de lire. Puis je demande avec qui ils sont entourés. Fait que c'est ça pourquoi, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Fait que gloire à toi Seigneur, pour toutes les hommes qui sont venus à Jésus-Christ, au Pakistan. Fait que je vous laisse. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Bruno Gentile. Sur Instagram, Gentile, Jesus for Life Bruno. Sur Twitter, maintenant c'est rendu X. Bruno Gentile, Telegram, WhatsApp, Skype. Puis c'est ici que je termine aujourd'hui, lundi 29 avril 2024. Fait que je vous aime tous au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen.